number 6 is related to a block diagram or block representation of difference equation. Okay. इसमें हमने थोड़ा सा कल बात करना शुरू की थी कि वी कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट our circuit or our difference equation in the form of a block diagram or a flow graph. Using the flow graph, we can actually try to optimize the circuit using different techniques. जो ग्राफ थ्योरी की या इस तरह की टेक्निक्स होती हैं उनको यूज करते हुए हम उनको कुछ ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं. That's an interesting part. So that is the reason we want to and we have already seen कि अगर आपके पास डिफरेंस इक्वेशन हो तो हम उससे एक ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं और अगर आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम हो तो आप उससे डिफरेंस इक्वेशन बना सकते हैं. So it is just the different form of representation of our circuit of our algorithm. हमने देखा था कि यार एक अगर आपके पास डिफरेंस इक्वेशन आ जाती है तो that is basically the algorithm जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम बेसिकली करना यही चाहते हैं कि वी वांट टू हैव अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर एल्गोरिथम, ताकि अगर हम जब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी को देना चाहें तो वी कैन गिव इट टू देम कि ओके दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट दिस थिंग. इसके लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी कि यार जब आपने एक एडर को रिप्रेजेंट करना है तो यूजुअली आप सिंपली एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर आप कहते हैं कि यार दिस इज एक्स ऑफ एन, दिस इज जेड ऑफ एन एंड दिस इज वाई ऑफ n is equal to x of n plus z of n. ठीक है, इस तरीके से आप एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर स्केलिंग हो तो यूजुअली इसको बाय दिस रिप्रेजेंट किया जाता है कि दिस इज स्केल्ड बाय a, दिस इज x of n, दिस इज a x of n. ओके, देन देयर इज अ डिले. डिले को कहा था कि हमने इसको अगर हमें x of n को रिप्रेजेंट करना है एज अ डिले, so what we do is simply say this is the inverse, this is x of n minus 1. so this is a delay register जिसका काम ये है कि वो इसको नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे आगे पास कर दे. इसी तरीके से हम लोगों ने एक सर्किट बना के देखा था कि अगर आपके पास एक डिफरेंस इक्वेशन हो which is y of n is equal to x of n plus a y of n minus 1. okay, हमने कहा था कि अगर इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सो ऑल दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू से ओके वी हैव y of n, इसको हमने कहा था कि इसको हम एडर में डालते हैं, इसको हम x of n इनपुट देते हैं, y of n को हम एक डिले करते हैं, इसको हम एक इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं. This is y of n minus 1, this is a y of n minus 1. So this is a very simple representation of an FIR filter, IAR filter. This is IAR filter जिसको हम कहते हैं one tap filter या a filter with one single coefficient, because these are the coefficients of this filter. Okay. अब हम देखते हैं इससे थोड़ी सी अगर हम कॉम्प्लेक्स किस्म की एग्जांपल ले लें. So let's take another example where we say okay y of n that is equal to x of n plus 0.5 y of n minus 1 plus 0.25 y of n minus 2 plus 0.01 y of n minus 4. Okay, so this is a difference equation that I want you to go ahead and think कि यार इसको आप implement कैसे करेंगे. Okay, एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है कि यार इसमें x of n आ रहा है which is input, good. y of n की delayed values आ रही हैं and each y of n is scaled by different values. ठीक है, so this is scaled by 0.5, 0.25, 0.01. So we have to do all of these things. उसके लिए हम क्या करते हैं कि okay, so what we have is we have our x of n. इसी को यूज करते हुए हम अपना y of n बना रहे होंगे.
this y of n is delayed by 1, which is again delayed by 1. Delayed by 1, ठीक है? What will be this value? If I write it down, this will be y of n minus 1. Agree? Yes, sir. N minus 2, y of n minus 3, and y of n minus 4. Okay. अब मुझे इसको किसी से स्केल करना था. I'll just write it down as Triangle. 0.5. 0.5 ही है ना? 0.5 है. Okay, and this goes over here into an adder और ये यहाँ पे चला जाएगा. Good. Then we have y of n minus 2, which was multiplied by 0.25. Say for y of n minus 3 there is nothing, so I can say that this is actually being scaled by 0. And this is being scaled by 0.01. I think it was 0.01. Good. So this is the flow graph block diagram of my circuit. अच्छा भाई, अब मैंने सर्किट में ड्रॉ तो कर दिया. अब इस सर्किट को देख के what can I tell? There are a couple of things that I can tell you. Okay, I'll be needing 4 adders. I'll be needing 4 multipliers, and I'll be needing 4 delay registers. Maybe I can say okay, I don't need this one क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो I can forget about this, तो मैं ये वाला एडर भी स्किप कर सकता हूँ. तो these are my hardware requirement, which is 3 adders, 1, 2, 3 multipliers. सर एक ही एडर मल्टीपल इनपुट्स के साथ भी तो हो सकते हैं. बिल्कुल, हम आते हैं उस चीज पे. 4 डिले रजिस्टर्स. ओके, जो आपने बात की कि आपके पास एक ही एडर मल्टीपल इनपुट्स के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, लेकिन बात यह है कि ईच वन ऑफ देम इज डिलेड बाय सम वैल्यू. ठीक है, हर प्रोसेस की, हर ऑपरेशन की कुछ कॉस्ट होती है. सो इट इज गोइंग टू, एन एडर इज गोइंग टू टेक अ फ्यू मिली सेकेंड्स टू डू दी प्रोसेसिंग. सही है. अब मुझे पता है कि जब मैंने एक, लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट क्लॉक साइकिल्स, कि हम लोगों ने डीएलडी में पढ़ा हुआ है कि देयर इज अ क्लॉक साइकिल, के हर जिस तरीके से आपकी क्लॉक जा रही है, so starting from this point to this point, so you have, this is your clock cycle. During this time you can do something. जैसे हम कहते हैं ये हमारा जितना भी सर्किट है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है. ठीक है. अब वी नीड टू इंश्योर कि जिस वक्त ये वाली वैल्यू स्टेबल हो, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे एडर पे इनपुट आ रही हो. ठीक है. तो वी नीड टू इंश्योर कि इस एडर की जितनी भी इनपुट्स हैं, जो कि ये इनपुट है और ये वाली इनपुट है, द लॉन्गेस्ट पाथ दैट थिंग हैज टू टेक इज दिस वन. जो यहाँ से आएगा, इसके बाद डिले होगा, फिर डिले होगा, फिर डिले होगा. तो अब इस एडर के लिए जो ये वाली वैल्यू है, व्हिच इज दिस वन, दैट हैज टू बी स्टेबल बिफोर इट कैन गिव द आउटपुट. ठीक है. फिर इसके लिए ये वाली वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए बिफोर इट कैन गिव द आउटपुट. सो दीज आर द थिंग्स जो कि आप डिजिटल सिस्टम डिजाइन के अंदर पढ़ेंगे कि यार किस तरीके से जो चीजें आपकी क्लॉक ट्रिगर्ड होती हैं उनको आप कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं विद दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट क्लॉक ट्रिगर्ड. ठीक है. क्योंकि अब आपने सब इस पे भी प्रोसेसिंग करनी है, इसने भी कुछ प्रोसेसिंग करनी है, उसका अपना डिले है, ये मल्टीप्लायर है, इसकी कुछ प्रोसेसिंग है,
टाइम डिले है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि कितना ज़्यादा वो टाइम लेगा. So that is why the first thing that you need to look at is what are the resource requirement. ठीक है, क्योंकि अब आप यू आर रियली गोइंग डीप इनटू योर सिस्टम वे यू आर थिंकिंग अबाउट कि अच्छा यार मुझे एग्जैक्टली एडर्स कितने चाहिए होंगे, एग्जैक्टली मल्टीप्लायर्स कितने चाहिए होंगे, एग्जैक्टली डिले रजिस्टर्स कितने चाहिए होंगे. ठीक है, तो उसके लिए you need to know the resource requirement and block diagram is a very good way that can just by looking at it you can tell कि okay यार आपको कितने ज़्यादा रजिस्टर्स चाहिए होंगे. तो उसके बाद हम देखेंगे जब हम इसके अंदर कुछ शफलिंग भी कर सकते हैं, that can actually help you reduce your requirements of or help you optimize your methods. Okay, यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Yes sir. Reason that I am asking is because इस वाले केस में हम लोगों ने सिर्फ जो है वो फीडबैक वाला काम किया है. ठीक है, क्योंकि y थी ना आउटपुट, y की वैल्यू को हम वापस लेके जा रहे हैं. We are using the feedback. Now we'll take another example where we will say okay, let's take this example as y of n minus 0.5 y of n minus 1 minus 0.25 y of n minus 2 is equal to x of n plus 0.7 x of n minus 1 plus 0.2 x of n minus 2. Okay, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर if I talk about coefficients, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यार जो भी हम डिफरेंस इक्वेशन बनाते हैं उसके कुछ coefficients होते हैं जिसको हम h of z की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि आप लोग जब आप फिल्टर की कमांड यूज करते हैं मैटलैब के अंदर, उसके अंदर आप coefficients दे देते हैं a, b, जो भी आपके पास x इनपुट है. ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये वाले जो मैंने कोएफिशिएंट्स लिखे हैं ये A केस हैं या B केस हैं? ये वाले कोएफिशिएंट्स 0.5, 0.25, 0 and 0.1. सर ये B केस है? B केस है. थोड़ा सा गलत है, दोबारा सोचिए. डिफरेंस इक्वेशन लिख दूं? B के और A के. डिफरेंस इक्वेशन मैं लिख देता हूँ. y of n that is equal to या y of n minus y of n minus 1 is equal to x of n minus k. This has to be k. ठीक है, यूजुअली हम इधर b k लिखते हैं, इधर हम a k लिखते हैं. दिस समेशन गोज फ्रॉम k is equal to 1 to m and this summation goes from k is equal to 0 to n. ठीक है, तो ये वाले जितने कोएफिशिएंट्स मैंने लिखे हैं these are my a k कोएफिशिएंट्स. सही है? Yes sir. y के कोएफिशिएंट्स हैं ये, इस इक्वेशन में ये सारे y के कोएफिशिएंट्स हैं. so these are my a k कोएफिशिएंट्स. okay, so let's talk about this one because इसमें ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी. इसमें हम क्या कहते हैं कि लेट्स से हम y को पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं बिकॉज वी नो कि चाहे y को इंप्लीमेंट करने के लिए या x को पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं. x को इंप्लीमेंट करने के लिए दिस इज माय x of n. I have to put an adder over here. So what happens over here is x of n is delayed by 1, then it is delayed by another value. Okay, this is 0.7, this is 0.2. Okay, this is my x of n. Goes over here. Then we have y of n. This y of n is delayed by a value. एक
दो कोफिशिएंट्स हैं पे, दिस इज डिलेड बाय अनदर वैल्यू, it is scaled by something, it goes into an adder, that goes into an adder. इसकी वैल्यू क्या है 0.5, 0.25. Okay, so this is my representation, block diagram representation of the given equation. We can see कि यार अच्छा क्या exactly ये वही terms बन रही हैं या नहीं बन रही. So this is x of n delayed by 1, which gives me x of n minus 1, which is scaled by 0.7, so this gives me 0.7 x of n minus 1. This is delayed by another value, which gives me x of n minus 2, which is multiplied by a factor. Yeah, किसी कॉल आ रही है जी. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह का शुक्र है सर. सॉरी, मुझे 3 दफ़ा कॉल आ रही थी, तो अमूमन 2 इज ओके, तीसरी दफ़ा जो होता है वो कोई ना कोई मसला ही होता है. Okay, so this is the delayed value of the next term, and this is at y of n minus 1, this is y of n minus 2. अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो रहा होगा कि why we used to write this equation as y of n is equal to x of n plus 0.7 x of n minus 1 plus 0.2 x of n minus 2 plus 0.5 y of n minus 1 minus 0.25 y of n minus 2. So इस तरीके से हम इस इक्वेशन को हमेशा लिखा करते थे, which is y of n is equal to x के coefficients and y के coefficients. And now just by looking at this thing you can see कि चला इसको हम इस तरीके से implement कर सकते हैं. और ये वाले जो coefficients हैं, these are the b k's and these are the a k. जो आपकी इक्वेशन हमने इससे ऊपर लिखी है, which is y of n is equal to summation of k is equal to 0 to n b k x of n minus k plus summation k is equal to 1 to n a k y of n minus k. ठीक है, ये इससे हम देख के कर सकते हैं कि यार कोफिशिएंट्स जो x के कोफिशिएंट्स है, दीज आर b केस, y के कोफिशिएंट्स है, दीज आर दी a केस. इसी तरीके से हम उसको जब फिल्टर की कमांड यूज करते हैं उसमें भी हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं, a, b, x. ठीक हो गया यहाँ तक? ठीक है. यस सर. यस सर. ये वाला जो पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन, ठीक है, मैंने जानबूझ के वो वाली इक्वेशन लिखी थी जिसमें x की टर्म्स भी हैं, y की टर्म्स भी हैं. दिस पोर्शन इज कॉल्ड मूविंग एवरेज. ठीक है, इसको कहते हैं मूविंग एवरेज, बिकॉज ऑल इट इज डूइंग इज टेकिंग द एवरेज ऑफ द प्रीवियस वैल्यूज. ऐसे करना है, जो जो प्रीवियस इनपुट आ रही है उसकी प्रीवियस वैल्यू को कंपाइल करके उसकी उसको वो अपने पास सेव करता जा रहा है, आगे फॉरवर्ड करता जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द मूविंग एवरेज. अच्छा, और ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, let me change the color, this portion is called
ऑटो रिग्रेसिव पार्ट। ठीक है, ऑटो रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है कि आप पिछली आउटपुट की बेसिस पे आप कह रहे होते हैं कि मेरी फ्यूचर की आउटपुट क्या आनी चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन। ये चीजें आप एआई में भी शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, या मशीन लर्निंग का कोर्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि यार व्हाट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन इज बेसिकली कि आप प्रीवियस वैल्यूज की बेसिस पे अगली वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज डूइंग। So this is autoregressive part is taking the previous values, combining it together and making the y of n by looking at y of n minus 1, y of n minus 2, y of n minus 3 and y of n minus k. और जो moving average है, all that is doing is taking the average of the current inputs. ठीक है, ऑटो रिग्रेशन जो है वो एवरेज ऑफ आउटपुट्स देख रहा है, जबकि मूविंग एवरेज जो है एवरेज ऑफ करंट इनपुट्स देख रहा है। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। गुड। ओके, यूजुअली अच्छा इस चीज को अगर हम एक्सटेंड करें तो यूजुअली हम इसको लिखते हैं एज ऑफ z, जस्ट फॉर द कंप्लीशन सेक मैं इसको कर रहा हूँ कि हम इसको लिखते हैं कि यार दिस इज b ऑफ k z रेज्ड टू पावर माइनस k, k इज इक्वल टू 0 टू n divided by 1 minus summation k is equal to 1 to m a k 0 is minus k। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग लिखा करते हैं। ठीक है, y ऑफ z ओवर x ऑफ z, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन इसको z डोमेन में इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, 1 हमने जो है वो y ऑफ n के लिए लिखा है। ठीक है, बहुत दफा होता है कि आप इस समीशन इसको भी समीशन के अंदर ले लेते हैं कि आप सिंपली से कि अच्छा यार दिस इज k इज इक्वल टू 1 टू k is equal to 0 to m, लेकिन you do know कि ये this first one which is a0 it is for y of n. Okay, let me give you a problem if you can solve this problem. So this is the example, and what I give you is h of z is equal to 1 plus 2z inverse over 1 minus 0.5z inverse plus 0.9z minus 2. Okay, पहले तो मेरे दो सवाल हैं आपसे। आप अगर ये वाले कोएफिशिएंट्स है, हाउ डू वी गेट these coefficients? Can somebody tell me how do we get these coefficients? कोएफिशिएंट्स निकालने का बेस्ट तरीका क्या होगा? सर डिफरेंस इक्वेशन निकालने। यस, यूजुअली हम कोई ना कोई टूल यूज करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने एफडीए टूल देखा हुआ है कि एफडीए टूल में आप फिल्टर को, ये बेसिकली फिल्टर ही है ना, फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं। इसका डिजाइन जब आप करते हैं तो आप इसके कोएफिशिएंट्स जो है, although अभी हमारा एक टॉपिक रह गया व्हिच इज फिल्टर डिजाइन, बाकी सारी चीजें हम कर चुके हैं। सॉरी मेरे इधर मुझे गले में कुछ मसला हो गया। तो फिल्टर डिजाइन के भी हमने कंप्लीटली देखा नहीं, लेकिन हमने एफडीए टूल को देखा हुआ है यार एफडीए टूल को यूज करके आप फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं विद स्पेसिफिक कट ऑफ, कि कितना कट ऑफ करे और उसके कोएफिशिएंट्स कितने हों, और उन कोएफिशिएंट्स को यूज करते हुए once you have the coefficients you can write h of z. If you have the h of z you can write the difference equation. If you have the difference equation you can go ahead and try to draw the block diagram. ठीक है, अच्छा ये वाला जो मेथड मैंने जिस तरीके से मैंने इस ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है, दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म 1. This is the direct form 1 representation of the difference equation. There is also a direct form 2. There is also a transpose direct form 1. There is also a transpose direct form 2. इसको हम लोग लिखते होते हैं डायरेक्ट फॉर्म 1. अभी जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी वो है डायरेक्ट फॉर्म 2, ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 1, ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 2. ये चीजें भी हमने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बाकी तीनों चीजें हम पढ़ेंगे। अगर मैं आपको ये मैंने आपको सिस्टम का जी ट्रांसफॉर्म दे दिया, व्हाट आई वांट यू टू डू इज
formulate the difference equation. Then what I want you to do is what I want you to do is draw df1 of this difference equation. ठीक है, अच्छा बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं. We can say okay, this is y of z over x of z. इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ and then I can write the difference equation by saying okay, so difference equation is y of n is equal to x of n plus 2 x of n minus 1 plus 0.5 y of n minus 1 minus 0.9 y of n minus 2. ठीक है. Can anybody who says के या or thinks के वो यहाँ से इधर आने में उसको कोई प्रॉब्लम होगी? Everything good? Yes, sir. Yes, sir.
ओके सॉरी थोड़ा सा आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का ट्रिप हुई है, so give it a few minutes before it gets back. मैं भी अपने मोबाइल फोन पे हूँ, मोबाइल फोन पे थोड़ा वीडियो भी इतनी अच्छी नहीं आएगी, so let's wait for a few minutes and as soon as we have the electricity I'll get back. ठीक है? ओके सर। Okay, sir. It's part of life. अब तो हमारी लाइफ का हिस्सा ही है ये, तो सब अमूमन लाइट आ गई। हमारे ऑफिस में बैकअप जल्दी आ जाता है, आज थोड़ा सा देर लग गया। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स बिफोर आई गेट द नेटवर्क बैक एंड आई विल कम ऑनलाइन। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, सॉरी, अपॉलॉजीज, थिंग्स डू हैपन, और जितनी गर्मी है उसमें इट इज लाइकली कि ये चीजें ज़्यादा कॉमन होंगी। बट एम आई ऑडिबल? Yes, sir. गुड। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने सिंपली जो हम कह रहे थे कि हमें डिफरेंस इक्वेशन बन गई, इसका हमने ब्लॉक डायग्राम बनानी है। तो वी नो कि अच्छा ठीक है, मुझे x ऑफ n लेना है, x ऑफ n माइनस 1 लेना है। ऑल दैट आई नीड टू डू इज पुट इट थ्रू सॉरी, गलत जगह पे ड्रॉ कर दिया। आई नीड टू पुट x ऑफ n थ्रू अ डिले, स्केल इट बाय सम फैक्टर जो कि है 2, x of n z inverse, और उसके बाद I need to take y of n delayed by a factor, take the next one delayed by a factor, and okay, and this one is 0.5 and this one is minus 0.9, z inverse and z inverse, and this is the block diagram or a direct form 1 representation of my difference equation. So this is df1 representation of my difference equation. ठीक है? What generically what I can do is I can say, okay, this is my generic difference equation, which is this goes from k is equal to 1 to m a k y of n minus k is equal to summation of k is equal to 0 to n b k x of n minus k. ठीक है? इसका हम लोग h ऑफ z की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज h ऑफ z इज, अभी हमने इसे ऊपर भी लिखा था, दिस इज k इज इक्वल टू 0 टू n b k z इनवर्स z रेशो माइनस k डिवाइड बाय 1 माइनस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू m a k z रेशो माइनस k.
इसकी अगर मैं एक जेनेरिक डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाना चाहूं, सो व्हाट आई नीड टू डू इज put it through a delay, put this through a delay, so this is my अगर मैं B की टर्म बात, this is my B0, B1, B2, BK, and then you get the other portion where this is y of n, this is 1, this goes through a delay, goes through another delay, किसी जगह पे कोई चीज़ क्लियर ना हो, सो डू स्टॉप मी कि यार ये भी आप क्या कर रहे हैं, कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई. So this is 1, this is A1, A2, AK. So this is Z inverse, Z inverse, Z inverse. ठीक है. So this is my generic direct form 1 representation of our difference equation. ठीक है. कोई भी हमें डिफरेंस इक्वेशन दे दी जाए तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से. एवरीबडी एग्री, एवरीबडी इज कंफर्टेबल. अगर मैं कोई सी भी आपको डिफरेंस इक्वेशन दे दूं तो आप इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे. Yes, sir. ओके. अच्छा, इसके बाद कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ है. आई टेक हमारी क्लास 25 तक है ना, सो वी हैव अराउंड 10 मिनट्स, सो 9 मिनट्स, सो इट्स फाइन. आई डू द मैथमेटिकल प्रूफ. सो व्हाट वी डू इज we say okay, our h of z, that was summation bk z raised to minus k over 1 minus summation ak z raised to minus k. This was my difference equation. I can actually split it. I can say okay, this is my one portion which is ak z raised to minus k, and this is multiplied by this other portion. ठीक है. This is what I call h1 of z. This is what I'm going to call h2 of z. ठीक है. So I can say कि मेरे पास जो भी इनपुट आ रही थी, let's say x of n, which usually goes through h1 of z and h2 of, if I do it completely, let's say this goes through h of z and I get the output y of n. ठीक है. अब मैं कहता हूं यार इसकी बजाय मैं इसको दो पोर्शंस में ब्रेक कर दूंगा. ठीक है. दो पोर्शंस में कैसे ब्रेक करूंगा कि एक को मैं कहूंगा h2 of z, h1 of z and I'll get the output. ठीक है. सिंपली मैंने क्या किया है कि जो मेरे पास h of z था मैंने इसको ब्रेकअप कर दिया into two portions. सही है. एंड वी नो कि ये कम्यूटेटिव होता है. मैं h1 को पहले लिखूं या h2 को पहले लिखूं, they are one or the same thing. So this thing h1 of z convolved with h2 of z, इसको मैं h1 h2 of z convolved with h1 of z, ये चीजें मैं इनकी लोकेशन को मैं चेंज कर सकता हूँ. ठीक है. When I can change the location, let me say कि ये intermediate value जो है this is w of n. ठीक है. अब हमारा क्योंकि ये LTI सिस्टम है तो दिस शुड वर्क परफेक्टली फाइन. सो व्हाट आई कैन से इज कि मेरा जो w of z है
that is h2 of z x of z, ठीक है, सॉरी ये z डोमेन में है तो ये मल्टीप्लाई होने थे, मल्टीप्लाई होते हैं, टाइम डोमेन में कन्वॉल्व हो रहे हैं, z डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. Okay, with this I can say okay, this was my 1 over 1 minus a k z raised to minus k x of z, and from there I can write w of z. From there I can write w of n, that is equal to summation a k w n minus k plus x of n. ठीक है, इज दिस करेक्ट? ठीक है, सिंपली मैंने एक डिफरेंस इक्वेशन बना दी. रीजन बीइंग कि इस डिफरेंस इक्वेशन को फिर मैं इंप्लीमेंट करूंगा. अगर दूसरा जो पोर्शन था y of z, दैट वाज h1 of z मल्टीप्लाई बाय w of z. अब ये मुझे पता था कि दिस वाज b k z raised to minus k, where k goes from 0 to n w of z. So from this I can write y of n is equal to summation k goes from 0 to n b k w of n minus k. ठीक है, अब मेरे पास ये दो डिफरेंस इक्वेशन आ गई. इन दोनों को डिफरेंस इक्वेशंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, इन दोनों को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली इनमें से एक एक को पकड़ते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं. पहले वाली इक्वेशन, ठीक है, विच इज y w of n is equal to a k w of n minus k x of n. इसको अगर हम एज अ डिफरेंस इक्वेशन इंप्लीमेंट करते हैं, सो आई कैन राइट देम डाउन ओवर हियर. चलिए पहले वाली इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ, दूसरी वाली इक्वेशन तो मेरे पास है. First equation comes out to be w of n is equal to summation a k w of n minus k plus x of n. ठीक है, इस वाली इक्वेशन को मैं पहले इंप्लीमेंट करता हूँ. This comes out to be plus z inverse and it keeps on going. Yes, sir. And you get this thing. ठीक है, this is my x of n, this is w of n, this is w of n minus 1, this is w of n minus 2, this is w of n minus k. ठीक है, अब मैं इस वाले दूसरे वाले पोर्शन को इंप्लीमेंट करता हूँ, विच इज w of n y of n. This gets added up and this is delayed, this goes through this and this gets delayed, gets delayed. Okay, and this is and this is w of n, this is w of n minus 1, this is w of n minus k. Okay, now you can see the okay, this is, let's put these as w of 0, w1, w2, bk, b, and this is 1, a1, a2, ak. Okay, now let's have a look कि यार अच्छा ये दोनों जो हैं, if we think of it as two separate circuits जिनको हमने आपस में मिलाना है, so we can say अच्छा ये वाली value is, this value is similar to this one, this is similar to this one, this is similar to this one. So actually I can go ahead and combine them into single circuit. ठीक है, and for doing that all that I need to do is say okay, I have an adder, I have another adder,
this goes through a delay, that goes through another delay, and in the end what we can do is simply say, okay, this goes here, and okay, so we need to have correct arrows. There we go. Okay, so this is what we have, which is x of n, which is y of n. This is what we say, okay, this is what we have done now, is the direct form 2 representation of our system, ठीक है, of our difference equation. What this does is number of adders उतने रहे, लेकिन number of registers आपके पास reduce हो गए, ठीक है। अब आपको अगर पहले n या k नंबर ऑफ रजिस्टर्स चाहिए थे, अब आपको k/2 रजिस्टर्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये k थे, these are also k रजिस्टर्स, तो आपके पास पहले अगर 2k की रिक्वायरमेंट थी, अब आपके पास सिर्फ k की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। This is what direct form 2 does, is that it makes the requirement of resources, it reduces the requirement of resources for you, ठीक है। So this is really helpful thinking कि जितना ज़्यादा आपके पास इन चीज़ों को आपने सिलिकॉन में इम्प्लीमेंट करना है, एंड सिलिकॉन इज वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव रिसोर्स, तो जितनी आपके पास रिसोर्स रिक्वायरमेंट रिड्यूस होती जाएंगी, उतनी ही ज़्यादा आपका सिस्टम जो है वो एफिशिएंट होता जाएगा, ठीक है। जस्ट फॉर द sake of completion, I'll write down these coefficients a1, a2, ak, 1, b1, b2 and bk. So this is my complete direct form 2 representation of my system, and we can use this for implementation of our difference equation. अब हमने आज के लेक्चर में दो चीजें पढ़ी, एक, अगर आपके पास डिफरेंस इक्वेशन हो तो आप उसको ब्लॉक डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि आप सिंपली उसी को लें, उसी फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट कर दें, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म 1। डायरेक्ट फॉर्म 2 इज कि आप ये जो H1 और H2 फिल्टर बनते हैं, इनको आप सॉर्ट ऑफ इनकी पोजीशंस को स्वैप कर दें। स्वैप करने से पता चलता है कि आप अपने रजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। व्हेन यू कंबाइन द रजिस्टर्स, आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्टर्स रिड्यूस हो जाती है, विद दैट योर सिस्टम बिकम्स अ बिट लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। अच्छा, बेस्ट चीज क्या है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, आपने करना क्या है कि आपने उस डिफरेंस इक्वेशन को ए केस और बी केस की फॉर्म में लिख लेना है। आपने इस वाले, लेट्स से मैंने आपको कहा कि आप डायरेक्ट फॉर्म 2 में लिख दें, ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है यार, डायरेक्ट फॉर्म 2 कैसे आपने बनानी है। बेस्ट थिंग इज, ये वाली जो डायग्राम मैंने आपको दी है, दिस वन, दिस ड्रॉ इट फर्स्ट, डिफरेंस इक्वेशन लें, डिफरेंस इक्वेशन में से ए केस जो कि y के कोफिशिएंट्स है, और b केस जो b के जो x के कोफिशिएंट्स है, उनको सेपरेट करें और इन जगहों पे सिर्फ लिख दें कि b1 इज इक्वल टू 0.5, b2 is equal to 0.25 and this is equal to 0.001, and this is the best way to not make any mistake. Otherwise हमेशा अगर मैं डायरेक्ट फॉर्म 1 की बजाय डायरेक्ट फॉर्म 2 दे दूंगा, तो आप you'll find it difficult and you will end up making mistakes, ठीक है। The best thing to do is simply draw this thing, general form draw कर लें, उसके अंदर coefficients को लेते हैं, that makes my life very easy when we are implementing these things, ठीक है। By this we have come to the conclusion of today's lecture. As a recap, today we have studied direct form 1, direct form 2 representation of the difference equation. We know कि ये हमने काम किस लिए किया है, ताकि हम उसमें कुछ, जिससे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकेंगे। फॉर ऑप्टिमाइजेशन इसमें यही है कि आप अपने हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस कर सकें, एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन एबल टू अचीव, ठीक है। एज अ रिकैप, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6, प्लीज स्टार्ट रीडिंग इट, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक द क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।